ये है हमारा व्हाइट बोर्ड। बेसिकली जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा, वी आर लुकिंग फॉर जो मैंने थ्योरम कहा कि गिवन एनी सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स जो भी होंगे हमारी सरफेस पे, तो वी कैन ऑलवेज चूज अवर, वी कैन रीपैरामीटराइज अवर सरफेस सो दैट नए पैरामीट्रिक कर्व जो है वो आपस में हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल हो। तो उसी सिलसिले में तो फर्स्ट वी डिराइव दिस एक्सप्रेशन। इट्स अ सिंपल वन, कुछ खास है नहीं। एक्सप्रेशन फॉर द एंगल between two intersecting curves on the surface. Intersecting curves on the surface. उसके बाद हम उस थ्योरम पे जाएंगे। ये भी कुछ नहीं, we just, you know, we okay, let me just write it down. So what do I have? I've got a surface patch, then I have some point, and then there possibly could be a curve here and another curve here which intersect at this point. Now, if I take this tiny bit of this change in this direction, and suppose the corresponding parameter values for this point is, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, फिर मैं इस कर्व की डायरेक्शन में थोड़ा सा गया, इस कर्व की डायरेक्शन में थोड़ा सा गया अलोंग द सरफेस, तो हम उसको बिल्कुल टाइनी वेक्टर लेंगे, मतलब इन्फिनिट स्मॉल चेंज इन वेक्टर्स। सो बेसिकली अगर ये r है और इसके पैरामीटर वैल्यू सपोज यू वी है, और मान लो एक डायरेक्शन में मैं लेता हूँ चेंज इन पैरामीटर्स एज, जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा इसका नेबरिंग पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, मान लो वो है r एट u प्लस डी यू, v प्लस डी वी, और सम अदर चेंज, मान लो इन दिस डायरेक्शन दैट इज r, पैरामीटर चेंज है r प्लस डेल u, r प्लस डेल v, v प्लस डेल v, यानी यहाँ पे जो स्मॉल चेंज है इन दिस डायरेक्शन इट इज डी यू डी वी, और दूसरी डायरेक्शन में जो पैरामीटर चेंज होगी, क्योंकि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सरफेस पे जा रहे हैं तो पैरामीटर तो चेंज होगा, तो दूसरे में है डेल यू डेल। एंड लेट्स कॉल दिस जो नेक्स्ट वेक्टर था, यहाँ पे एक वेक्टर जो बनेगा उसका पोजीशन वेक्टर मान लो इस पर है r प्लस सम डी आर, और यहाँ पे है r प्लस सम डेल आर। इट इज अ स्मॉल टाइनी चेंज इन द वेक्टर्स, so that ये टाइनी वेक्टर है इट वुड बी डिफरेंस ऑफ द फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, और यहाँ पर भी फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। ये जो थोड़े से छोटे से वेक्टर्स जहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्व्स होंगे, एक होगा मेरा डी आर, दूसरा होगा डेल आर। अब चूंकि हमें पता है जो angle between these two curves on the surface would be, it would be angle between this dr and del r ultimately, because angle between two curves at the point of intersection is actually angle between the tangent lines there. So let me write it down. So how can we, we just take the dot product and find the angle. That is the basic idea. So let uv be the point of intersection by that I mean the parameter point तो होगा r at uv, लेकिन उसके parametric values be the point of intersection of the two curves on the surface, any arbitrary curves, and dr and del r be the displacements along the two curves
along the two curves corresponding to the increments, corresponding to the change in parameters or increments corresponding to the parameters. क्या था अपना, एक तो था अपना चेंज हमने ली du dv उसका नाम, एंड दूसरे का del u del v. Now dr we know can also be written as this tiny vector in the direction with parameter changes du dv and del u del v. We can write them as small change in u into r sub u because we lie on the surface plus small change in v into small change in क्या मैं कर रहा हूँ I should write it like this better है जैसे जैसे लिखते हैं नहीं कंफ्यूज हो जाओगे. Let me write it as ru du plus rv dv. That is the complete differential का जो formula है. Similarly, this del r can be written as because the function is differentiable, r is differentiable. We are dealing with smooth regular surfaces. So this can be written as rv ru into small change, that small change in u, that particular small change, and rv into del v. यहाँ थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, देखो dr है actually small change in r, but if we are dealing with two different changes at the same point, तो ऑब्वियसली हमें कोई दूसरा सिंबल यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये डेल आर किया. बल हालांकि दोनों में कोई फर्क नहीं, दे आर जस्ट टू डिफरेंट चेंजेस. क्योंकि हम दो यूज कर रहे हैं तो हमें दूसरा नाम देना पड़ रहा है, अदरवाइज इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं. इट्स अ स्मॉल चेंज इन R, this is a small change in U, this is a small change in V, same here. Anyways, now, if obvious thing is if psi is the angle between the two curves, we can write cos of psi as this, the dot product of these tiny vectors dr d del r divided by their magnitudes dr del r. Okay, now that would give us what? We just substitute the values. So this would be du r sub u plus dv r sub v dot product with, of course, del u r sub u plus del v r sub v. मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ सबस्क्रिप्ट नहीं, ये यहाँ सबस्क्रिप्ट. Okay, divided by, of course, the norm of the same vectors. That is, what do I have? dr into del r. इनका magnitude, इनकी length. So that would give us what? That would give us cos of u, cos of psi जो है इस angle का. That would be, now we use the fact that ru dot ru is e, ru dot rv is f, and rv dot rv is g. तो वो substitute करके हमें मिलेगा cos of psi equal to e times du into del u plus f times du del v plus dv del u plus g times dv del v divided by, of course, this length dr and length del r. So similarly, sine of psi would be equal to, we just take the cross product in terms of, instead of dot product, it would be dr cross del r divided by the length of dr, length of length of del r, sorry,
which can be written as, of course, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट वुड बी नथिंग बट, मैं सीधे लिखता हूँ, इट वुड बी du del v माइनस del u dv। इससे पहले भी हम एक जगह कर चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट का चक्कर, इंटू आर यू क्रॉस आर वी होल डिवाइडेड बाय जो कि अपना है। और अगर हम चाहें तो इसको लेंथ ऑफ दिस वेक्टर को हम ds से डिनोट करते हैं समटाइम्स फॉर टाइम चेंज। dr को हम ds से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनको हम ds एंड डेल s से भी लिख सकते हैं, हालांकि अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स tan ऑफ साई जो है, और देन हाँ, एंड यू कैन राइट दिस एज ऑफ कोर्स फर्दर du del v, क्योंकि इसकी जगह मैं h सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, del u dv इन mod into h डिवाइडेड बाय, चाहे तो इसको आप ds लिख लो और इसको del s, वो भी चलेगा। Similarly, tan of psi is equal to sin psi divided by cos of psi. And you just divide, so you will basically get what? du del v minus del u dv multiplied by this h whole divided by जो उसका है, वो ये तो कैंसिल हो जाएगा, du है ना, modulus of dr and modulus of del r, so it would be e du del u plus f du del v plus dv del u plus g dv del. So, so that would be expression for an angle. Sine time, if you want to evaluate. Now, the special cases, if जो हम consider करेंगे, if psi is equal to pi by 2, psi is equal to pi by 2 के लिए हमें मिलेगा, we get e, we get cos of psi is equal to 0. So for that the condition would be e du del u plus f times du del v plus dv del u plus g times dv del v is equal to 0. So this would be the condition for orthogonality of two curves, which whose directions are given by these increments du, dv, and dv del. So which is the condition? Which is the condition for orthogonality of two curves on the surface? तो इसको हम यूज करें। Well, as special cases we can think of, अगर मैं एक कर्व को फिक्स करूं, मान लो एक को पैरामीट्रिक कर्व लेता हूं, सो फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर केसेस इसमें एक हो सकते हैं, कोरोलरी, चलो इसको लिख लो या एज अ रिमार्क, पर्टिकुलर केसेस इसमें आ जाएंगे कौन से, से वन एंगल between the direction given by the increment du dv and the parametric curve. पैरामीट्रिक कर्व्स दो होती हैं, एक में हम से पहला वाला v is equal to constant, that means u curve. So if v is constant, पहली बात तो ये है कि now if v is constant, तो उसका मतलब है जो चेंज इन v है, so चेंज इन v जो है वो 0 होगा। So मेरा जो इंक्रीमेंट होगा along this direction, it would be del r would be just r sub u del u। अगर ना मैं दूसरी, मतलब एक की डायरेक्शन तो ये है, दूसरे की मान लो del u del v है, तो del v तो 0 होगा, सो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स सो दैट, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, del s is for a small change equal to length of this del r, it is justly simply root e into del u, because this is positive change, तो वो हम हमेशा लेते हैं।
दिस डेल जो होता है ये सम पॉजिटिव चेंज होती है, या डी जो होता है वो सम पॉजिटिव चेंज होती है। सो दैट कॉस ऑफ साई अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो वो बन जाएगा ई डी यू डेल यू प्लस एफ टाइम्स डी वी डेल यू। जो सब्स्टिट्यूट किया मैंने उस कॉस साई में इन फॉर्मूलाज को, डिवाइडेड बाय रूट ई इंटू डेल यू इंटू डी एस। तो वो बन जाएगा ऑफ कोर्स, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/√e, इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, e टाइम्स डी यू बाई डी एस प्लस एफ टाइम्स डी वी बाई डी एस। ऑफ कोर्स ये कैंसिल होगा, इसमें पहले में डेल्यू कैंसिल होगा, दूसरे में भी डेल्यू कैंसिल होगा, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं। सिमिलरली साइन ऑफ साई जो होगा वो होगा 0 माइनस डेल यू डी वी, क्योंकि डेल वी जीरो है, बिकॉज वी आर अलोंग द कर्व। जो मेरी डेल यू डेल वी अगर ये लाई करती है अलोंग v इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके इंक्रीमेंट को ये रिप्रेजेंट करती है, ऑब्वियसली देन दिस डेल v शुड बी जीरो, एंड अकॉर्डिंगली वी सब्स्टिट्यूट, सो ये बन जाएगा ds रूट e इंटू डेल u, विच वुड बी जस्ट ऑफ कोर्स h भी था यहाँ पे h, so it would be h by root e into dv by ds। so दूसरा पर्टिकुलर केस है सेकेंड, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, जो दूसरी पैरामीट्रिक कर्व between the direction du comma dv and the parametric curve u equal to constant, u equal to constant। अब हमें वही जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, अब if u is equal to constant then del u would be zero, and accordingly you तुम खुद सब्स्टिट्यूट करोगे, you will do it yourself और उसको इवेलुएट करोगे फॉर्मूला, जैसे तुम्हें मिलेगा cos of psi equal to f du del u प्लस नो ई ई ई ई प्लस, हाँ ई तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा खाली ये जी डी वी डेल यू, नहीं कौन सा खत्म हो जाएगा, जस्ट मिनट, डेल यू जीरो आएगा, सो यू विल गेट कॉस ऑफ साई का फॉर्मूला क्या था, कॉस ऑफ साई का फॉर्मूला हाँ यहाँ पे। अब अगर मैं डेल यू को जीरो करूं, ये तो गया और ये भी गया और ये भी, नहीं ये बचेगा, सो एफ डी यू डेल वी, ये तो तुम्हें मिलेगा एफ डी यू डेल यू, डेल यू तो नहीं होगा, ये होगा डेल वी क्योंकि डेल यू इज जीरो, और जी डेल वी डी वी डिवाइडेड बाय जो भी मतलब तुम्हें मिल ही जाएगा, टी ds by root g after substitution into dv, and you just do it yourself। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, फॉर्मूला में डेल यू को पुट करना है जीरो, जिस तरह से हमने वन केस वन में किया। ओके नाउ लेट्स लीव इट एंड कम टू आवर मेन थियरम। ये तो वो चीजें थी जिनको हमें इसमें यूज करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ जैसा कि इससे पहले में भी हमने किया था कि अगर मैं लेता हूं कोई फंक्शन फाई यू वी इक्वल टू सम कांस्टेंट, अगर दो वेरिएबल्स हैं और दे इक्वल टू कांस्टेंट, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूंगा एक्स स्क्वायर चलो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम आर्बिट्री कांस्टेंट सी, now this, या c square या c ही लिख लो, doesn't matter, so this represents a family of circles with radius root c। तो स्क्वायर रूट ऑफ सी अगर रेडियस ले लो और सी के जितने वैल्यूज दोगे, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज, so that would represent a family of curves, so this always represents a family of curves because they are basically level curves of a surface, जब हम इस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। But the question is, if this is constant and I take d phi
and assuming that this function is differentiable, I would get 0. अगर ये function differentiable है, so but it's a function of two variables. इसका complete differential 0 है, अगर ये 0 constant है, ये change नहीं होती. So that means this should be del phi by del u into du plus del phi by del v into dv is equal to 0. Or I can say phi sub u du plus phi sub v dv इक्वल टू 0. उसका मतलब अगर ये फंक्शन डिफरेंशियल है और हमें पता है उसको इंश्योर करने के लिए, अगर ये फंक्शन डिफरेंशियल, तो अगर मैं ये मान लूं ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कंटिन्यूअस, तो अगर ये कंटिन्यूअस हैं तो देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज कम फ्रॉम सम फंक्शन, मतलब जो डिफरेंशियल थी और वो कांस्टेंट थी. So what does that mean? That means this differential equation also represents a family of curves. If I assume that जो यहाँ पे दो functions है ये continuous है. Actually इनके derivatives continuous है, because to ensure that, what is the condition for differentiability? किसी ने कुछ पूछा है? Sir, please let. मैंने तो सबको किया था, कोई रह गया? हेलो, पता नहीं कहाँ सब सो गए सब. सो इसको आपने उसी टाइम किया था फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब थोड़ा सा और हम चाहेंगे इसके बारे में जानना कि अगर अगर ये कर्व है, राइट, so if I want to find the ratio of the change which is basically the tangent to this family of curves in a du by dv, it would be actually equal to, if I want to see the जो basically the ratio of the changes means if one thing changes and the other thing changes, अगर उनका ratio जो है, I know the ratio, that means, like, what I'm trying to say is that if I know this ratio of change, because basically अगर तुम इसको देखो कि अगर ये दोनों जीरो हो जाए तब इट इज ट्रू, मतलब इट इज वैलिड ऑलवेज, है ना, कि अगर फाइव सब यू जीरो और फाइव सब वी भी जीरो हो, दिस इज वैल्यू ऑलवेज वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. सो देयरफॉर हम एक और कंडीशन पुट करेंगे कि दे बोथ इकट्ठे जीरो ना हो. इफ दिस हैज टू रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, हम एक तो ये मानेंगे जो फाइव सब यू एंड फाइव सब वी आर कंटिन्यूअस, राइट. और दूसरा सो दैट, ये मतलब सो दैट इट हैज, बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन ये मैं तभी कर सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव ये तभी डिफरेंशिएबल होगी, तभी मैं डी फाइव को लिख सकता हूँ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव सब यू एंड फाइव सब वी इफ the function is differentiable. उसके लिए क्या है, ये partials continuous होनी चाहिए. Furthermore, to remove the triviality और indeterminacy जैसे हम कहते हैं कि अगर ये दोनों जीरो हुए फिर तो ये हर किसी भी चीज के लिए ट्रू है. So we assume that कि ये जो phi u and phi b, they are not both zero at the same time. Okay. So in other words, अगर मुझे कोई कहे कि मैं इसको ऐसे भी, मतलब मुझे नहीं पता इस फाई के बारे में, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सामने है पी डी यू प्लस क्यू डी वी, ठीक है, तो मैं कहूंगा हाँ अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस वुड रिप्रेजेंट, अगर ना मैं कॉन्वर्सली जाऊं, दूसरे रास्ते से जाऊं कि यहां से तो मुझे मिल गया, हाँ इट डज रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स बिकॉज़ इट इज लेवल कर्व ऑफ इट्स सरफेस, दीस आर for different values of c, as long as c is constant, it could be any constant. So for different values of c, it represents a family of curves and I get a differential equation. But on that differential equation there would be some condition ki, in order to validate, yeah, to make sure that this is all valid, so we have to ensure that phi is differentiable. For that, these partials of phi should be continuous. Now, somebody tells me I've got some function p and q and this differential equation. This would represent a family of curves if when p and q are continuous and
not both 0, because then I can reverse the process and get to phi of v equal to c, which represents a family of curves. तो ये तो एक प्रिलिमिनरी है कि a family of curves can be always represented by a differential equation of the type p du q dv, provided p and q are continuous functions and both are not simultaneously zero. ये तो खैर थोड़ा सा background था. Now we come to the definition of what we call orthogonal trajectories. So let me call orthogonal trajectories को हम पहले define करेंगे. So now a family of curves, एक तो हुआ मैं ऐसे लिखूं phi uv is equal to c, but अगर मैं इसको explicitly solve करूं, जैसे मेरे पास है x square plus y square is equal to c square, then अगर मैं इसको explicitly solve कर सकूं, so I can write it as y is equal to c square minus x square. बात एक ही होगी, it would again represent these curves, but y as a function of x. Yeah, should I say v as some function of u? So I would get matlab, some situation like this, right? Okay, so what? So कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल कर्व्स है, सॉरी सी यहाँ पे, और जीरो भी वैसे सी है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है. सो आई गेट दिस फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर y is a function of x, then of course this also ensures, अगर मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ, कि ये जो dv by du है, अगर ये 0/0 मिले, अगर दोनों ये 0 हो, तो ये इंडिटरमिनेट हो जाएगा. सो आई डोंट नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स. तो वो जो हमारी एक्स्ट्रा कंडीशन है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी. Now if this represents a family of curves, then I know I can find the tangent to these curves by dy by x, or minus phi sub u by phi sub v. वही आएगा ना. अगर मैं यहाँ इसको dv by dx dv by du के लिए सॉल्व कर लूं, वो बन जाएगा माइनस फाई u by फाई v. तो उसका जो टेंजेंट होगा वो होगा फाई u by फाई v. Now one thing I know, that if two curves are orthogonal, if two curves are perpendicular at some point, तो वहां पे उनके tangents perpendicular हो. That's what I mean by perpendicularity. और हमें पता है एक कंडीशन है स्लोप्स पे tangents के, ये उसका स्लोप होगा उन कर्व्स के tangent का. तो आई नो दैट इफ आई नो वन कर्व, तो वो जो ऑर्थोगोनल का भी ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है. यानी अगर एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो उनका प्रोडक्ट अगर -1 मिलता है, तो देन आई नो, मतलब देन ये जो दूसरी कर्व होगी उसका स्लोप मुझे मिल जाएगा जो उसके ऑर्थोगोनल है. यानी m2 वुड बी इक्वल टू -1/m1. तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं चाहता हूं, अगर मुझे ये वैल्यू पता है, टेंजेंट का वैल्यू जो कि पता होगा मुझे, अगर फैमिली ऑफ कर्व्स, जो ना मैंने कंडीशन, ये दोनों इकट्ठे जीरो नहीं है, इनडिटर्मिनेट नहीं है, देन आई नो दिस वैल्यू, है ना, dv by du. ओके, सो अगर ये du by du मुझे पता है, यानी उसका स्लोप पता है जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का, सो देन I also know the slope of the curve that intersects the given curve at right angles. यानी वो बराबर होगा simply phi v by phi u. So from this I can get another family of curves which is orthogonal to my original family of curves, और हम उनको बोलते हैं orthogonal trajectories. So let me write it down for any given family of curves. For any given family of curves on a surface, actually everywhere, uh, in R3, by that I'm meaning, on a surface, on a surface, there always exists a second family.
called the orthogonal trajectories, called the orthogonal trajectories of the given family and are such that at each point of a curve of one family of a curve and such that at each point of a curve of the family of the given family, a curve from orthogonal trajectories intersects it at right angles. तो अगर कोई given family of curves है, which we can write as a differential equation or as a as this phi u v is equal to c, so then we can find another family of curves automatically, जो जिनके जो क्या बोलते हैं, हाँ, हर कोई कर्व मतलब वो बेसिकली राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती है. नाउ वी कम टू मेन थियरम. जो सारा हमने प्रिपरेशन की वो इस थियरम के लिए है. फॉर अ सरफेस, ऑफ कोर्स बाय दैट आई मीन रेगुलर सरफेस को से मुझे यहाँ लिखना चाहिए था. फॉर अ रेगुलर सरफेस, और दैट्स प्रिज्यूम्ड, हम जो भी सरफेसेस पढ़ रहे हैं वो रेगुलर है. Parameters can always be chosen. Parameters can always be chosen so that the curves of a given family the curves of a given family and their orthogonal trajectories become the parametric curves. Proof भी इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है. So let R is equal to R at UV be the equation of the surface. So let's call this 1, and let phi sub UV equal to C be the equation of a given family. हमने एक given family of curves दी, let on the surface be the equation of the given family of curves on 1. Now you have to remember that we already have parameters, है ना? Already इस पे एक collection of parameters है, और उन्हीं parameters के लेते हुए हमारे पास एक family of curves है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं. Now what we do is मैं दिखाऊंगा कि मैं इसको reparameterize कर सकता हूँ कि such that this family of curves और इसकी orthogonal trajectories parametric curves बन जाए. Okay, so let me do that. यानी इसको मैं U curve बना सकता हूँ और मैं एक collection V curves दूसरी ले सकता हूँ, uh, which are orthogonal to this family of curves and they are new parametric curves. So that is what I have to show. Now from second, इसकी जो differential equation बनेगी वो होगी phi sub u
du plus phi sub v dv is equal to 0, and let it be equivalent to p du plus q dv, where so that equal to 0, so that p is equal to some lambda times, क्योंकि right hand side 0 है, I can just take a parameter, take a number, जिसे multiply करो कोई फर्क नहीं पड़ता. Q is equal to lambda times 5v for some lambda not equal to 0, क्योंकि they cannot be both equal to 0. Also मेरा जो ये du by dv है वो होगा minus phi sub v divided by phi sub u, which would be minus q by p, जो उस तरह से मैंने वो लिखा है. Or I can write the same thing as du by minus q is equal to dv by minus p, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और in other words I can say minus qp जो है, they are the direction ratios, or मतलब they are, since they are proportional to these numbers, so basically therefore they lie in the same direction as du dv. जो change है वो minus qp से भी मिलेगी हमें, मतलब if we are looking for just the direction. Are the direction ratios of the tangent at any point uv of the members of the family 1 of the family given by the equation 2, family of curves given by equation 2. Now what we do, हम इसकी orthogonal trajectories ढूंढेंगे. Let the direction ratios of the tangent at this point qv, हमें पता है अगर ये कोई family of curves है तो इसकी एक orthogonal trajectories भी है, of the members, of the orthogonal trajectories orthogonal trajectories of the orthogonal trajectories of 2 be denoted by, let me denote them by some change in u, some change in v, so that